मैं बस यही कहूंगी कि बड़े हैरान करने वाले नतीजे आए हैं। जिस तरीके से लोकसभा में 151 असेंबलीज पे हमारी लीड थी, वो सिमट कर अगर इस नंबर पे आ गई है तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि कैसे इतना डिफरेंस आ गया। जो भी सर्वेज चल रहे थे सब कांटे की टक्कर बता रहे थे। जो भी सर्वेज हो रहे थे उसमें महाविकास अघाड़ी को बढ़त दे रहे थे। बात सब बता रहे थे एज है। एक कांटे की टक्कर इस तरीके से हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्यजनक भी है, सवालों के घेरे में भी आता है, और मन में मैं एक सेंस ऑफ सरप्राइज है कि जो हम जनता के बीच में देख रहे थे, महिलाओं के साथ देख रहे थे, पुरुषों के साथ देख रहे थे, आक्रोश जो था 1500 रुपए मिलने के बाद भी वो महिलाएं बता रही थी कि हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, और उसके बाद ये इस तरीके के आउटकम आना, आई वुड से हमें कुछ टाइम लगेगा फॉर इट टू सिंक इन। आप ही के पार्टी के नेता संजय राउत का बयान आया कि ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये जनता कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। क्लियरली अगर आप जैसे बार बार मन में एक शंका होती है कि जो पहली बार नहीं उठ रहा है, बार बार उठता जा रहा है कि क्या ईवीएम पे भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए, स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन उसको सीधे सीधे खारिज कर देता है रादर देन विनिंग ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। कितनी महाराष्ट्र में कितनी जगहों पर मैं गई थी जहां पे वहां पे लोग आकर हमसे कहते थे वोट तो हम आपको देंगे ही, पर आप ईवीएम पर ध्यान दीजिएगा। सबने हमसे यही आकर कहते थे। तो ये क्योंकि इतना चेंज आया है फ्रॉम लोकसभा टू महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव, हैरान करने वाला है। और इस पे मैं मानती हूं कि इवन फॉर मी मेंटली इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल कि इतना हमने आक्रोश देखकर भी वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, इस तरीके के नतीजे आए हैं। एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये सही मायने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। महायुति के जो घटक हैं, मतलब जिस तरह से कहा जा रहा है, कभी प्रवीण दरेकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, नरेश मस्के बोलते हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनेंगे, और अजीत पवार की तरफ से भी उनके जो हैं लोग कह रहे हैं कि अजीत पवार बनना चाहिए। तो किस तरह से देखती हैं अभी ये मुख्यमंत्री की दौड़ है? देखिए, महाराष्ट्र को संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और महाराष्ट्र में सभी के हितों की लड़ाई लड़ना उससे भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ चुनाव हैरान करने वाले नतीजे आए हैं, दूसरी तरफ हो सकता है जनता का ये विचार रहा होगा कि इन पे समर्थन दिखाना लाड़की बहन रही हो या बाकी कुछ कारण रहे हो, पर जो भी मुख्यमंत्री बने, बहुत हमने देखा है लूटमार हुई है, पैसों का खेल हुआ है, पार्टियों को तोड़ने का काम हुआ है, जो महाराष्ट्र के संस्कार और संस्कृति के बहुत खिलाफ है। अब जो मुख्यमंत्री बने वो हीलिंग टच महाराष्ट्र में देना जरूरी है, क्योंकि बहुत दरारें पड़ चुकी हैं, चाहे मराठा बनाम ओबीसी हो, चाहे धंगर कम्युनिटी और बाकी सारी कम्युनिटीज हो। तो दरारें बहुत हैं, हिंदू मुसलमानों में दरारें बनी हैं, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके का एक माहौल बनाया गया। तो जो भी हो महाराष्ट्र के हित में हो, यही उम्मीद करती हूँ। What do you have to say about the result coming out in Maharashtra election? What if? I'm sad. I'm shocked. I am surprised. And honestly, I wasn't prepared to come and defend a loss, simply because we were working with the people, and on the ground sentiment was totally pro Mahavikas Aghadi. The women of Maharashtra were also coming forward and talking about voting for Mahavikas Aghadi, for Uddhav Sahab. And for us to see this kind of a result, it's come as a surprise. And it does, I will continue to say that while the election result has shown something, it does raise questions on the credibility of the elections, because what we saw on ground, what the surveys were showing, what the sentiment was, what both sides felt, that it was a neck-to-neck fight, for the result to come out like it's a bit shocking. Your party leader Sanjay Raut is saying that this is not a people mandate. Something is I definitely feel there are some factors that have come into play which need to be investigated. Simply because like I said, both sides, not just our side, even their side believed it was a neck-to-neck fight. They felt they had an edge, we felt we had an edge. But for the results to come out in such a fashion that they seem to have won almost all the seats that they have contested on, comes as a surprise. And what Sanjay Raut ji is saying is something that every single Maharashtra Vasi feels, resident feels. And questions have been raised multiple times about it. That there cannot be such a massive difference and massive swing of votes between the Lok Sabha and the Vidhan Sabha.
So that is something that needs to be investigated, and because Maharashtra is an important state, it decides the destiny of the country and the development of the country. It should be something that has to be independently investigated. In my youth, in our race of CM is started. Praveen Darekar is saying that Devendra Fadnavis will become CM. Naresh Muske is saying Eknath Shinde, and from Ajit Pawar side also. So considering that the three of them are now busy fighting about who will become the chief minister, I'm just hoping and I'm just praying for the sake of my state, a state which has seen immense, a narrative which was so divisive, from batenge to katenge, ek hai to safe hai, from Marathas versus OBC, from Dhangar community versus others, that it would see a healing touch. Whoever becomes the chief minister, that chief minister should work for the goals of Maharashtra, for the betterment of Maharashtra. Maharashtra has lost a lot. It saw two political parties being broken down for the lust of coming to power. It saw election commission function in a manner which was never heard of and which is being challenged in the Supreme Court by us. We are fighting that fight. And whoever is chosen to become the chief minister provides the healing touch and takes Maharashtra towards its glory, its lost glory over the years, and brings economy back on track. We've seen industries go out of the state, we've seen joblessness, we've seen inflation, we've seen farmer distress. All of that will need to be addressed on a priority by whoever is the incoming chief minister. Which factor do you think this Latki Behan or some schemes? From whatever I saw, women when they came out for our rallies, they felt that 1,500 that they were giving and the prachar that they were doing was I would say not enough, and they felt that they were being cheated because the money started coming to them only post Lok Sabha elections after they saw a loss. And whether it is that as a factor, whether it is about that over 1,000 government resolutions that were passed by the cabinet within 10 days of going into an election, over 1 lakh crore being spent, which was even flagged by the finance department of Maharashtra. All those factors do play an important role, and we will sit down and we will figure out that what really are the causes for this kind of an outcome.